हेलो मित्रों, अमे तरफ वाड़ीनाथ आई जाइए। निकुल मुन बोलो थी आइए बोला मामा क्या जता डायरेक्ट आई जाइए। अमे तमे जुई सको वाड़ीनाथ महादेव दर्शन मंदिर दर्शन करवा आया। अमे निकुल आगे जाए हम बोलो કેટલું મોટું મંદિર है તમને દેખાય। हेलो જોઈએ को शिवलिंग दर्शन कराओ। आ बाजू भगवान की मूर्ति જોઈએ को तमे मंदिर बहुत मोटू है तमे देखाया। आरती नो नजारो है જોઈએ तो हिंगराज माता की मूर्ति है। बोलो आइए दर्शन करवा निकुल आवा देखाय तमे अमे पॉइंटी बार नो व्यू थोड़ा जोईशु तो तमने देखाया। बार देखाय बधु जबरदस्त सन बधु पेलो बार गेट रे मोटो थई तो अथी मस्त रोड बनायेलो हो। अमे आ बाजु थी आया अहीं अने ए बाजु निकળી जाऊँ मैं तमे जोई सको वाणीनाथ मंदिर। कोकदार आवा तरफ वालम आओ तो वालम थी थोड़ू छेटू थाय तो दर्शन करवा जरूर थी आवजो। अमे बोला मामा क्या जता गोकरपुरा ते दर्शन करवा आई गया हो कन बोलो आप जो कने वाणीनाथ आए वाणीनाथ महादेव ना दर्शन करवा आई गई। कबूतर बबूतर अंदर आओ ना એટલે જારી लगाई है। अभी कामकाज चालू थोड़ू देखाय तमे मळीए बताओ तमने मम्मी हेड आई गया। आ बाजू हनुमान दादा मंदिर है पेली बाजू गणपति दादा मंदिर है पेलू धर्मशाला जो लागे से ये हो। आ बगीचो हो बगीचा में प्रवेश करवा ना पाड़ी है पानी चालू हजी एवं तमे जोईए तो तमने आखू मंदिर थोड़ा दूर जईने बताऊँ। आ बाजू में बधु કેટલું है तमे आओ तो मुलाकात लेजो जरूर थी। शू कहूँ निकुल मुलाकात ले जरूरी है। एक नरेंद्र मोदी भाई पण आई गया था उद्घाटन तो ताना देखाय तमे मंदिर। बोलो पेल बाजू दर्शन करवा ये बाजू जबरदस्त मंदिर है मोटू दई कौन है देखाया बधु जिम जिम जी तमने बधु बताइए छे अमे। सदगुरु परदेशी बापना दर्शन करे में देखो
આમાં બહારની સાઈડ બધું હોય પગલિયાનું જોઈએ તો તમે બધું સજી દર્શન અમે એમાં ઘેર જઈએ ફોન આવે નિકુલના પપ્પાનો એટલે અમે ઘેર જઈએ તમને બતાવી ઘેર જઈએ રસ્તો કેવું નિકુલ અમે અમુક ઘેર રહીએ દર્શન કરી આ ગાર્ડન અને આ મંદિર આ બોલો મોજલી હે ઉપર આવી જાય પાણી ઉડીને ફુવારો ચાલુ હતી અને મોજલી અમે અડાઈએ ગયા પબ્લિક આજે આતા દાડાની ઓછી હે ઓમ વધારે હોય ઓમ વધારે ના ના એ તો જતું રહેતું જતા રહેવું છે ડાયરેક્ટ નીકળ આમાં આપણે ઘેર અડાઈ દર્શન કર્યું આ સોમવાર બોમવાર હોય એવું કરવા આવ્યા હોય ને તો બહુ પબ્લિક હોય પણ પબ્લિક એટલે પબ્લિક તો છે તમે જોઈએ મિત્રો હું હે ને વારીના જઈને ઘેર આવી જઈએ મમ તમે જોઈએ કહો નિકુલ મને મૂકીને ઘેર જીવો મારા એમ હન તે મમ્મી બેસ હોય એટલે દૂધ ભરા જવાનું રેડી થઈ જઈશું દૂધ ભરા જઈશું